Now, after that, question number 4. What we have in this question number 4, the height in centimeters, of the 11 players in each of the two, we have to draw a back-to-back stem and leaf diagram. It's a question of representation of data. अब आप देखिए, the first aces में what is the minimum value? The minimum value is, अब इसमें देखिए 3 digit नंबर आपको दिया गया है, तो फर्स्ट 2 डिजिट जो होंगे वो स्टेम में आ जाएंगे, लास्ट डिजिट जो है वो लीफ में आ जाएगा. सो मिनिमम वैल्यू मुझे नजर आ रही है फर्स्ट 2 डिजिट में 16, और मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है फर्स्ट 2 डिजिट में, यहां पर नजर आ रही है एसेस में 18 और जेट्स में नजर आ रही है मुझे 19. तो इट मींस वी हैव टू गो फॉर स्टेम. स्टेम के लिए हमें कहां तक जाना है? स्टेम के लिए हमें जाना होगा बच्चों 16 से लेकर 16, 17, 18, 19 तक. Now, here I'm writing jets and here I'm writing aces. Now, start करते हैं. इसको डायरेक्टली हम जरा चेक करते हैं. 16 के साथ एसेस कितने हैं? 16 के साथ एसेस कितने हैं? तो एक तो 16 के साथ द मिनिमम वैल्यू ऑफ is here 4. After that 16 के साथ then 6. After that 16 के साथ 8, and after that with 16 it is 9. So here are the values with 16. 17 के साथ जरा हम चेक करते हैं. 17 के साथ the first value is 1. The second value is, with 17 it is 3, and the next value with 17 it is 4. Now with 18 the first value is 0. The second value is 1. The third value is 2, and the next value is again 2. All the things are here. Now for jets, with 16 we have 6 and 8, 6 and 8. With 17 we have 0, 0, then 4, 4, 0, 4, 4, 5, 0, 4, 4, 5. With 18 we have 1, 1, 8, 8, 1, 1, 8, 8. And with 19 we have only 0. This is your stem and leaf diagram. Now we have to make a key. Key में with 16, and here it is 4. We can say that for jets the key is 166, and for aces the key is 164. This is the key for stem and leaf diagram. After that we have to calculate median and interquartile range of aces. Median and interquartile range of aces. अब आप देखिए, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए we have to calculate Q2 middle value, then Q1 for calculating the interquartile range, and Q3. How to calculate Q2? जरा चेक कीजिए टोटल वैल्यूज कितनी हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. The total values are 11. So first divide 11 by 2. So 11 divided by 2 is 5.5. 11 divided by 2 is 5.5. इसको आप round off कर दीजिए तो you will get the median. Sixth value is the median. So now count the sixth value. 1, 2, 3, 4, 5. Sixth value is the median. This is, I'm saying that Q2. And what is Q2? It is 173. Q2 is 173. And now
Before Q2, how many values we have? 1, 2, 3, 4, 5. 5 values हैं. Now, 5 divided by 2. The answer is 2.5. Round off it. Third value is the median of the first data. So what is the third value? 1, 2, 3. This is the third value. This is the median of the first half. So it means this is Q1. And after that, again from Q2, we have to move up to the third value. So this is 1, 2, third. This is the next third value. So here it is Q3. So we can say that Q1 is 168 and Q3 is, we can say that Q1 is 168 and Q3 is 181. These are the values जो हमने मीडियन भी कैलकुलेट कर लिया और Q1 और Q3 भी कैलकुलेट कर लिया. अब इनको जरा हम सेकंड पार्ट पे लेकर आते हैं. As we have to calculate here, first we have to calculate median. So what is the value of median? The value of median is Q2, which is 173, and interquartile range is Q3 minus Q1. And what is Q3? Q3 is 181. What is Q1? It is 168. दोनों को subtract किया गया. So the result is 13. This is the interquartile range. Hopefully the question is clear, not a difficult question. Now, in the C part, give one comment comparing the spread of height of aces with the spread of height of jets. Spreadness हमें चेक करनी है डायग्राम को देखते हुए, इस स्टेम लीफ डायग्राम को देखते हुए. तो आप देखिए एसिस की स्प्रेडनेस कम है एज कंपेयर टू द स्प्रेडनेस ऑफ जेट्स. जेट्स की स्प्रेडनेस पूरी 19 तक है और एसिस की स्प्रेडनेस सिर्फ 18 तक है. तो हम लिख सकते हैं कि जेट्स हैव लार्जर range. Jets have larger range, or we can also call it jets have larger spread. Now, this is your question number 4. After the question number 4, question number 5 is the height of the members of a club are normally distributed. Again, the question of normal distribution. With mean 166, standard deviation 10, find the probability that a randomly chosen member of the club has height less than 170. Now again, we have to make a normal curve. Normal curve बना लिया करें, बहुत easily question solve हो जाएगा. What is the mean value? The mean value is 166. जब भी mean value 0 ना हो, so it means these are the values of x. We have to calculate. Find the probability that a randomly chosen member of the club has height less than 170. We have to calculate this probability in which the height is less than 170. But we can't do this question before we have to convert all the values in the values of z. So according to z, the mean is always 0. And for this, again, we have to using the formula x minus mean divided by standard deviation. Standard deviation is 10. So what is the answer? The answer is 0.4. अब एक चीज सुनिएगा, यहाँ पर डायरेक्टली 170 हमने पिक कर लिया, प्रीवियस में 0.5 ऐड किया था, क्योंकि जब भी अप्रोक्सीमेशन की बात होती है तो कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई होगा. अगर अप्रोक्सीमेशन की बात ना हो तो कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई नहीं होगा. जो वैल्यू गिवन दी गई है उसी वैल्यू के थ्रू z कैलकुलेट कर लिया जाएगा. नाउ we have to calculate probability up to 0.4. Probability up to 0.4 from the normal table is 0.655. This is the first part. Now, after that, what we have in the second part? In the second part, given that 40% of the members have height greater than h. 40% of the member have height greater than h. So now, again, I'm making a normal curve. 40% is greater than h. Exactly at the center, it is 50% towards left and 50% towards right. So 40% is somewhere here. This is the 40%.
This is the 40% means 0.4. We have to calculate at this point the value of H. We have to calculate at this point value of H. So now, first I'm saying that the probability of Z is 0.4. Now I'm calculating the value of Z reverse method, probability inverse of 0.4. According to the normal curve, the value of Z in the reverse is 0.253. अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो चैनल पर जाकर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हाउ टू कैलकुलेट द रिवर्स वैल्यू वो चेक कर सकता है. आई एम नॉट explaining here that how to calculate the reverse value. Now, as we have to find out the value of H, so I'm converting Z by using the formula of X minus mean. Mean is 166 given in the question. Over standard deviation is 10 equals to 0.253. And according to this, what is the value of H? The value of H is 168.53. This is the second part of normal distribution question. Hopefully it is clear. Now, after that, in the B part, the random variable X, in the B part, the random variable X is normally distributed with mean mu and standard deviation sigma. Given that sigma is 2 upon 3 times mu, find the probability that a randomly chosen value of X is positive. Means we have to calculate that the probability of X is positive greater than 0. Greater than 0. So I'm saying that probability of Z is greater than X की वैल्यू अगर 0 है तो इसको कन्वर्ट करेंगे by using again the formula X minus mean. Mean is mu divided by standard deviation is 2 upon 3 times mu. So now I'm saying that it will be minus mean upon 2 upon 3 times mean. Mean and mean cancel out. It will be greater than minus 3 upon 2, which is 1.5. It means we have to calculate the probability of Z greater than minus 1.5. According to the normal curve, where will be this? The center of the curve is at 0, and we need to calculate the value greater than negative 1.5. From 0, the left side is negative and the right side is positive. We have to calculate this probability. So, greater than 1.5, how to calculate? We can say it directly. We have to calculate the probability of 1.5. So by using the normal table, probability of 1.5 is 0.933. This is the part B of question number 5. After the normal question, the next one, question number 6. Now it is a question of probability. Question number 6. क्या कहा गया? Freddy has 2 bags of marbles. Bag X contains 7 red, 3 blue marbles. Bag X contains 7 red and 3 blue marbles. Bag Y contains 4 red and 1 blue marble. Freddy chooses one of the bags at random. A marble is removed at random from the bag and not replaced. A new red marble is now added to each bag. एक बार जब आपने एक मार्बल पिक कर लिया, उसके बाद a new red marble is now added to each bag. दोनों bags में एक और red marble add कर दिया गया. A second marble is then removed at random from the same bag that the first marble had been removed from. जिससे पहले एक मार्बल पिक किया था उसी से ही दूसरा मार्बल पिक करना है. Draw a tree diagram. We have to draw a tree diagram. So now, first Freddy chooses one of the bags. It means bags के लिए भी सबसे पहले हमें options बनाने होंगे कि पहले वो bag X choose कर रहा है या bag Y. What is the probability of bag X? Half. What is the probability of bag Y? Half. Now, after that, from bag X, we can choose red or blue. From bag Y, we can choose red and blue. If from bag X, we are choosing red marble, then the probability will be 7 divided by total events are 10. And blue is 3 over 10. From bag Y,
red marble is 4 upon 5 and the blue marble is 1 upon 5. After that, again, the second condition, red blue, second condition, रेड ब्लू, क्योंकि हमें एक बार फिर से मार्बल पिक करना है, एक बार हमें फिर से मार्बल पिक करना है, रेड ब्लू और रेड ब्लू। अब आप देखिए जरा, अगर हम पहले बैग से रेड मार्बल पिक करते हैं तो बैग में कितने मार्बल रह गए? एक्स बैग में 6 मार्बल रह गए। कितने रह गए? 6 मार्बल्स रह गए। लेकिन एक रेड मार्बल इसमें दोबारा से डाल दिया गया, तो अब दोबारा से 7 मार्बल्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई रेड की? 7/10। और ब्लू की क्या हो गई? 1 - 7/10, 3/10। अब अगर पहले बैग से, बैग एक्स से हमने ब्लू मार्बल पिक किया तो ब्लू मार्बल कितने रह गए? 2 मार्बल्स रह गए ब्लू। रेड इसमें एक ऐड कर दिया गया तो रेड वाले मार्बल्स कितने हो गए? रेड वाले मार्बल्स, अब आप देखिए, इन द एक्स, फ्रॉम द एक्स बैग, अगर हमने पहले ब्लू मार्बल पिक कर लिया, ब्लू मार्बल पिक कर लिया, तो ब्लू वाले हमारे पास कितने रह गए? सिर्फ 2 मार्बल रह गए। कितने रह गए जनाब? सिर्फ 2 मार्बल रह गए। और अब दोबारा से अगर हम ब्लू इसमें से पिक करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2/10। कितना हो जाएगा? 2/10। और रेड मार्बल्स कितने हो गए अब? 8/10। मजीद आगे चलते हैं। अगर बैग वाई से रेड मार्बल पिक कर रहे हैं तो रेड मार्बल बैग वाई में कितने रह जाएंगे? 3। लेकिन फिर से एक ऐड कर दिया जाएगा तो दोबारा से 4 रेड मार्बल हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/5। और ब्लू की क्या हो गई? 1/5। नाउ अगर ब्लू मार्बल पिक कर लिया हमने पहले फ्रॉम बैग वाई, तो अब तो कोई भी ब्लू मार्बल नहीं रहा। एक रेड मार्बल ऐड कर दिया तो 5 रेड सिर्फ इस बैग में रखे हुए हैं। तो अगेन ब्लू पिक करना 0, और रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी 5/5 क्या हो गई? 1 हो गई। दिस इज द ट्री डायग्राम अकॉर्डिंग टू पार्ट ए। दिस इज द ट्री डायग्राम अकॉर्डिंग टू पार्ट ए। नाउ in the B part, find the probability that the both marble, okay, first actually we have to use tree diagram in the second part। तो मैं tree diagram को जरा वहां पर कॉपी कर दूं। Now in the part B, in the part B क्या कहा गया? In the B part, find the probability that both of the marbles removed from the bag are the same color, are of the same color। तो बच्चों सेम कलर के क्या क्या मार्बल हैं? रेड रेड, from this blue blue, from here it is blue blue, and from here it is red red। How to calculate the probability? रेड रेड की प्रोबेबिलिटी अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो इससे पहले कि तमाम ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। जब भी हम हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन, जब भी हम वर्टिकल मूव करते हैं तो एडिशन होगा। सो रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी, पहले हमने बैग एक्स पिक किया, फिर रेड मार्बल और दोबारा से रेड मार्बल। तो जनाब प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई? 49/200। 49/200, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। नाउ फ्रॉम दिस ब्रांच अगेन बैग एक्स multiply by blue marble is 3/10, again blue marble is 2/10, so the answer is 6/200। After that, here red red, again bag Y probability half. First red 4/5, second red 4/5. So the answer will be 16/50. And now here in the last, यहां से तो ब्लू ब्लू पॉसिबल ही नहीं है तो इसको हमने रिमूव कर दिया। वी जस्ट हैव दीज 3 थिंग्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर the final probability is sum of all the probabilities, and sum of all the probabilities according to your calculator is 0.595, summation of all the probabilities of the same color. Now in the C part, what we have in the C part, find the probability that
bag Y is chosen. Find the probability that bag Y is chosen. Okay, in the C part, again, we have to use our tree diagram. Again, we have to use our tree diagram. In the C part, क्या कहा गया? Find the probability that bag Y is chosen given that आ गया जनाब. Given that के बाद जो भी लिखा हुआ होता है वो total events होते हैं. Given that के बाद जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या होगा जनाब? Total events होंगे. So now, given that the marbles removed are not both the same color. प्रीवियस पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. प्रीवियस पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी सेम कलर की, तो सेम कलर ना हो तो 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीवियस पार्ट 0.595. ये टोटल इवेंट्स हो गए. इसमें से प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बैग वाई इज चोजन. अब आप देखिए टोटल इवेंट्स आ क्या रहे हैं, डिफरेंट होने चाहिए. एक ये बना, डिफरेंट एक ये बना, डिफरेंट एक ये बना और डिफरेंट एक ये बना. इसमें से प्रोबेबिलिटी हमें किसकी लिखनी है? बैग वाई चूज किया जाए. इट मींस ये दो ब्रांचेस जो होंगी ऊपर आ जाएंगी. तो जनाब फर्स्ट ब्रांच की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? बैग वाई चूज किया हाफ, देन रेड 4/5, देन ब्लू 1/5 प्लस अगेन बैग वाई चूज किया 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्लू चूज किया 1/5, रेड चूज किया 1. So according to this, by using our calculator, the final result is 0.444. This is the probability question, and the last part is conditional probability question. Hopefully it is clear. Now, we are moving further. Question number 7, the question of permutation and combination. क्या कहा गया जनाब permutation combination के question में? Find the number of different arrangements of the 9 letters in the word Andromeda in which no consonant is next to another consonant. सबसे पहले हम चेक कर लें consonants हैं कितने. Consonants हैं 5, vowel कितने हैं इसमें 4. हमें consonants को अलग करना है. अब आप देखिए अगर alternate arrangement पे हम जाते हैं तो consonants अलग हो जाएंगे, और alternate arrangement कभी भी दो ग्रुप्स की करनी हो तो हम कैसे करते हैं? दोनों ग्रुप्स के अलग अलग फैक्टोरियल्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं. स्टूडेंट यहां पर क्या प्रॉब्लम करते हैं? ये रिजल्ट दे देते हैं, बट दिस इज नॉट द रिजल्ट. यहां पर ये भूल जाते हैं कि हमारे पास रिपीटेड लेटर आइडेंटिकल लेटर्स भी मौजूद हैं. ए 2 बार आया, डी 2 बार आया, तो डिवाइड किससे किया जाएगा? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल. आइडेंटिकल से डिवाइड करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स. सो द रिजल्ट इज 720. अब आप देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. 2 स्टेप में इसका रिजल्ट आ रहा है सिर्फ. नाउ इन द नेक्स्ट, find the number of different arrangements of the 9 letter in the word Andromeda in which there is an A at each end and D are not together. A each end पर होगा, A जो है वो each end पर होगा, और D एक साथ नहीं होंगे, और D एक साथ नहीं होंगे. तो फर्स्ट आई एम मेकिंग बॉक्सेस फॉर दिस क्वेश्चन. कितने बॉक्सेस बनेंगे? टोटल 9 बॉक्सेस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ए एट ईच एंड, ए आ गया दोनों एंड्स पर, एंड डी आर नॉट टुगेदर. नॉट टुगेदर को डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम डी को एक साथ लिख रहे हैं. डी जब एक साथ हुआ तो डी के लिए बन गया बड़ा बॉक्स. अब हम इस पर अपना काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. बच्चों ए कितने हमारे पास 2, तो पहले दो में से कोई सा भी एक ए यहां पर आ सकता है. आखिर में एक में से कोई सा भी एक ए यहां पर आ सकता है. दरमियान में कितने बॉक्सेस आ गए? 1 2 3 4 5 6. दरमियान में 6 फैक्टोरियल, और बड़े बॉक्स में 2 डी हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल. Now, again, we have to divide this by 2 factorial into 2 factorial because of 2a and 2d, identical letter की वजह से. So the result is 720. So the result is 720. अब हम क्या करेंगे? अब हम वर्किंग ऐसी करेंगे कि एक जनरल आंसर कैलकुलेट करेंगे. यहां पर किसका जनरल आंसर?
like 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए को तो हम रखेंगे कॉर्नर्स पर ही, ए के लिए तो कंडीशन फिक्स है। तो अब आप देखिए कोई से भी दो ए में से एक ए यहां आ सकता है, और हियर इट इज वन। दरमियान में डी को हमने अब जनरली यहां पर डी को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कहीं पर भी डी आ सकता है। तो हाउ मेनी बॉक्सेस वी हैव? 7 बॉक्सेस वी हैव। सो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अगेन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हमने क्या किया बच्चों, यहां से जो रिजल्ट आएगा ये वो रिजल्ट आएगा 2520, कि जिसमें डी कहीं पर भी आ सकता है, एक साथ भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है। तो 2520 में से जो एक साथ वाला डी है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो आंसर क्या बना हमारे पास? 1800। तो ये क्या हुआ हमारे पास, वो आंसर आ गया कि जिसमें ए तो हो कॉर्नर्स पर और डी एक साथ ना हो, क्योंकि जो डी एक साथ था उसके पॉसिबिलिटीज को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया टोटल पॉसिबिलिटीज में से। होपफुली दिस question of permutation is clear. The next one. 4 letters are selected at random from the 9 letter in the word. Find the probability that this selection contains this selection. Selection आ गया तो we have to use combination. This selection contains at least 1D. At least 1D. हम जरा चेक कर लें. And exactly 1A. हमारे पास 2A हैं, 2D हैं और 5 अदर लेटर्स। नाउ कंडीशन क्या दी गई? कंडीशन ये दी गई, कंडीशन ये दी गई कि हमारे पास एटलीस्ट 1D का आना जरूरी है और एग्जैक्टली 1A। तो जनाब अगर 1A हम पहले सिलेक्ट करते हैं 2C1, 1A आ गया। डी में से 2C1, एक डी सिलेक्ट कर लिया। टोटल हमें एलिमेंट कितने सिलेक्ट करने हैं? 4 लेटर्स हमें सिलेक्ट करने, 4 लेटर्स सिलेक्ट करने हैं। तो 2 लेटर सिलेक्ट हो गए, रिमेनिंग में से कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो ये 4 लेटर सिलेक्ट हो गए। नाउ ए एग्जैक्टली 1 ही होगा, ए फिर वही 1 हुआ, और डी दोनों भी आ सकते हैं क्योंकि डी के लिए कहा है एटलीस्ट 1D। तो एक हो या एक से ज्यादा हो, तमाम प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज हमें लिखना है। तो रिमेनिंग में से कितने आ गए बच्चों? रिमेनिंग में से आ गए 5C1। सो नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट स्टेप? इट इज 40 एंड द आंसर ऑफ द सेकेंड स्टेप इट इज 10। दोनों को ऐड कर दिया, 50 पॉसिबिलिटीज ऐसी होंगी सिलेक्शन की कि जिसमें एग्जैक्टली 1A होगा और एटलीस्ट 1D होगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ sorry, we have to calculate the probability. So it means this is not the result. For probability, what to do? The likely events are 50. The likely events are 50 and the total events are 9 लेटर में से 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल इवेंट आर 9C4। By this the probability will be 0.377. This is the final answer as we have to calculate the probability. Okay, now after that, this is the last question. This is the last question, question number 7 of permutation combination. अब आप देखिए थोड़ा तेजी से हमने पेपर सॉल्व किया, कंप्लीट पेपर सॉल्व हुआ। 11:02 पर हम स्टार्ट हुए थे और 11 एंड टाइम जो है हमारा 11:45। अगर इसको करते हैं और इसको हम करते हैं 11 o'clock, तो इट मीन्स 45 मिनट्स में वी हैव कंप्लीटेड आवर पेपर। और टाइम जो पेपर में होता है 75 मिनट्स होते हैं। 30 मिनट्स सेव कर लिए हमने। अगर तो फिर वही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो टाइम काफी होता है पेपर में, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू पेपर 1 विच ईयर, वो नेक्स्ट क्लास में ही हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।